Sir, this session is Then for what? live. Yeah. Who is this? Hello. Sir, Zakir Mia. Yeah, Zaki. Actually, this is a SQL section. I'll be taking the SQL. Okay, from scratch to advanced. Till then, you have learned around the joins concepts, right? So I'll be taking the SQL from the scratch only. Every things will be covered in detail, and I'm going to cover till advanced. All after the join concepts also, like indexes, injections, the normalization, store procedures, and all that part. Okay. Okay, sir. Okay. So the time schedule is 7 to 8, but we're going to just reschedule it around between 7 to 9. Mostly I'll going to keep because 8 to 9 I have a doubt solving session. So Okay. I'll keep either a 7 to 8 or 9 to 10. Okay, but I'll let you know before that. Every day, sir. Yeah, every day from Monday to Friday I'll be taking. Okay, sir. So you will continue where sir will stop. No, I'll be taking. I'll complete SQL. Whatever the things we require, complete everything. Okay. Okay, from basics. From basics, from scratch till advanced, till store procedure and all that things. Okay, sir. And after that, you will also take Tableau and Python. No. Tableau will going to cover by the Chandramouli sir only. Python, if you want, then I'll cover in detail. Okay, sir. Okay, no issues. Okay, so this is an extra section provided by the CoachX. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. I So got it. because of many, I guess requested I have got that Yes, I sir. should cover the sequels. So Yes, I'll. sir. Actually, I think the syllabus is going faster, so that's why. Yeah, definitely. Okay, sir. Thank you. And I'll be bilingual. Okay, if you want Okay, me to sir. explain in English, I'll explain in English. And अगर हिंदी में करना है तो I'll do everything in Hindi. Okay, sir. Okay, no issue. Okay. Okay. Oh, great. Till then, let's join the others.
Yeah. Hello everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. So yeah. So as I discussed, this is the advanced SQL sessions. Okay, I'll be covering the SQL training from scratch till advanced. Okay, whatever the doubts you have, you're going to get in this sessions, you can ask me here. Then you all have a doubt solving session, right, at 8 p.m. every day, and all other doubts can be cleared at that particular sessions. So this is the separate session taken by the CoachX. Okay, everything. And in this particular sessions, I'll be covering after the joins concepts. Okay, till then you have studied only the joins concepts, right? And I'll be taking from scratch till joins, till stored procedures, indexes, triggers, normalizations, injections, and everything, whatever the things are included in SQL. Okay. So are you ready or excited? Yes, sir. Oh, great, great. Just give me a minute. Ma'am is calling me. Just give me a minute. Yeah. Hello, everyone. Sorry for the interruption. Actually, I'm just discussing this timing issues. So when you all are available, tell me whether it is a perfect from 7 to 8 or 9 to 10 after the doubt solving session. Just let me know, all of you. Sir, 7 to 8 is perfect. I guess 9 to 10 would be better. Yeah, that's I'm asking because someone having the 7 to 8 and someone having 9 to 10. No, Because because we are yeah, we have you have your professional works also. That's why I'm asking. yeah. So probably by 9 everyone would be free. So that would be better. Okay. Okay, Prasanjit, what are you satisfied that from 9 to 10? No problem, sir. So Okay. others, they are free, means they are Yeah, yeah. available. Okay, I got message like 9 to 10 would be fine. Yeah, okay. So today I'll be taking around 7 to 8, okay? And from tomorrow onwards, I'll be creating the link from 9 to 10. Is it okay, everyone? Is it fine? Just Yes, let me sir. know. Okay. Yeah, others? Yeah, just okay. So yeah, so let's start with the today's session. This will be the from scratch. Okay. I don't know how many of you know the SQL. Means mostly till the advanced and till the scratch part. But I'm damn sure that some of the basic things even you're not able to just remember the in sequels. Okay. So whatever the things you want and whatever the doubts you're going to get in the SQL, just let it ask me. Okay. And I'll be the bilingual because many students I'm just having little bit of problems in this all English things related. So I'll be taking in Hindi also and as well as in English. Okay. Is it fine by everyone? Just let me know.
And the session should be, guys. Okay, if I'm asking some questions to you, just give me the answers. Okay. From every day or weekends or classes? No, it's from Monday to Friday, every day. Okay. 9 o'clock. Yeah, 9 to 10. Night? 9 to 10. 10. Evening? Evening. Yeah, okay, sure. It will be evening. Okay. So yeah, shall we start now? Yes, sir. Okay, great. So now let's start. Just let me know whether my screen is visible or not. Okay, I'm sharing my screen. Just let me know, please. Yeah, is it visible? Yes. Okay, great. Yeah, so let's start with the SQL. So the first very basic questions come into mind, right? When we are learning the SQL, what is meant by the SQL? Most of us know that this is a query language, structure query language, right? And it is used to manipulate and access the database. This is all things you mostly know. And many of you, which is just learning from the scratch, this particular SQL. SQL, I'll tell you, it is a database language. Okay. You can say database language or a programming language in order to store the data or in order to process some information on the data, and that particular information or storing processing will be done on the relational databases. Okay, because SQL will going to mostly used on the relational databases only. Now what is meant by relational databases, I'll be explaining. I'm just coming within a few minutes. Okay, so what happens, this query language just get stable released around at 2016 in December, around 6 years ago, and this SQL become the standardized by the American National Standard Institute. You might be heard about this particular institute, right? This is that particular institute which gives some standardization to the any kind of a languages. ओके जब भी मुझे किसी लैंग्वेज को मुझे रिलीज करना है, ठीक है, और किसी लैंग्वेज को मुझे ये करना है, तो स्टैंडर्डाइजेशन को देने के लिए हम लोग यूज करते हैं मोस्टली अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ही रिस्पॉन्सिबल रहती है किसी भी लैंग्वेज को मोस्टली अगर उसको वर्ल्ड में ये करना है, रिलीज करना है, उसके वर्जन्स को रिलीज करने, तो उसको कौन ये कर देती है, परमिशन ग्रांट करती है, एनसी ग्रांट करती है. ओके, एंड वन मोर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन. ओके, दिस आल्सो प्रोवाइड सम काइंड ऑफ एन स्टैंडर्डाइजेशन टू द SQL. So they have provided in 1986 as well as in 1987. Okay. So this is the basic scenario of about the SQLs. Although I'm going to take in detail, but before that, let's understand what is meant by the databases. Okay. So can anyone tell me what is meant by databases? Till now you have just learned. What do you understand by the databases? I have written something here by my own terms. It's a Sir, collection database is a collection of records. data. Okay, database is a collection of data. Collection Sir, of the records. data can be historical data or current data. Means it can be historical data or it can be the data which is currently used. Okay, great. It can be currently used. Yep, good. Others? Okay, I'll from now onwards I'm going to say the names. Okay, then I'll see. Okay, yeah, Zakir. Do you know about the what is meant by database? Zakir? Yes, sir. It is the systematic collection of data. Great, systematic collection of data. Because see, guys, what happens? I'm asking the question you between. Okay, why? Because see, these are some basic questions they will going to ask in the interviews also. Okay, if you are giving the interviews, the first very basic question they will you're going to ask what is meant by database. What do you understand by the term database? Okay, they don't want any kind of an some bookish information which is written in a web or which is written in anywhere in the internet. Okay, they want that. What do you understand? सर डेटा मींस वो डेटाबेस मींस स्टोरेज ऑफ डेटा. जब डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अरेंज किया जाता है, अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम व्हिच एन एप्लीकेशन कैन इंसर्ट और रिट्रीव डेटा फ्रॉम इट वेरी इजीली एंड क्विकली. Great. Yeah, I'm expecting this one only. Great, nice. This is the right, Anna. And some of you have said the collection of data. That is also perfectly correct. Okay,
presentations of the data in some particular storage of the data, that is also the correct. All of you have given a perfect answers. Okay, so now what happens? Actually, as this particular name suggests, database, okay, where we store our data, okay, and whatever the things we have stored, whatever the information we have stored in that particular data, it needs some kind of an you can say system, right? It needs some kind of an base, some kind of a container, right? We if we want to hold the water, then we want some kind of a container, right? We can hold the water in some containers, and then we can use that particular water. In that only, we can't just randomly just put the data anywhere, right? We want some kind of a container. So that particular container is called as a database. Okay. So it's a Yes, sir. collection, as it is just said that it is a systematic collection of the data, and that particular data can be systemized way, very organized way, one below the other. Okay, we having a separate column, we having a separate structure. Okay, we have a separate types of things in that particular data. Okay, so if we have a database, okay, there are different types of database, because see, we have a different types of containers, right? We have a cylinder containers. अगर मैं पानी को उसमें hold कर रहा हूँ, we have a bucket, right? मेरे पास bucket है, then मेरे पास कैन रह सकता है, then मेरे पास वाटर बॉटल है. So different types के हमारे पास है कि नहीं उस वाटर को होल्ड करने के लिए. उसी तरह से डेटा को होल्ड करने के लिए we have a different type of database. Okay, so around 5 to 10 types of databases are there. One of the most famous databases is the relational databases we're going to study, and the first database we have called as a distributed database. Okay, got it everyone, what I'm saying? Yes, sir. Okay, Yes, sir. great. Yes, sir. Great. Now see, what happens in this particular distributed database. See, distributed, if I'll see, Sir, suppose, yeah. well, your voice is very slow. Should I go slow? Yeah. Okay, I'll be slow. Now see, first one is the distributed database. Okay, now just think of it. The distributed database, you can say it is some kind of a common databases. Okay, as well as whatever the information we're going to capture by the local computers or by the local servers. Okay, that particular data is not going to store at a one place. Okay, means we can't keep the data at a one place. Suppose मेरे पास रेलवे का डाटा ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? अब रेलवे का, इंडियन रेलवे में उसका डाटा कितना रहेगा, राइट? बहुत ज्यादा डाटा रहेगा, अराउंड मिलियंस मिलियंस में हमारे पास डाटा कलेक्ट होता है, राइट? रेलवे, हमारे पास रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम में, यू ऑल हर्ड अबाउट इट, IRCTC. तो जो डाटा जनरेट होता है वो बहुत ज्यादा, अराउंड टेराबाइट्स में डाटा जनरेट होता है. ओके, सो वी कांट मींस कीप दैट ऑल डाटा विद इन वन प्लेस, राइट? एक जगह पे अगर हमने रख दिया तो मैसअप हो जाएगा कि ट्रेन के टिकट्स का डाटा डिफरेंट है, देन वी हैव अ डिफरेंट डाटा ऑफ यू कैन से सपोज रेस्टोरेंट्स का डिफरेंट है, या फिर फूड आइटम्स का डिफरेंट है, देन यू कैन से टिकट कलेक्शन एंड रिसीविंग्स का डिफरेंट है, राइट? अब मैंने सबको एक ही जगह पे मैंने रख दिया. सपोज मुझे मिल्क भी स्टोर करना है, मुझे हनी भी स्टोर करना है, मुझे ऑयल भी स्टोर करना है. When I am going to put that all things in a one container, what happens? Definitely that particular क्या होगा फिर उसका? सर मैशअप हो जाएगा ना? Of course, totally मैशअप हो जाएगा, राइट? अब मुझे सपोज मुझे उसमें से हनी चाहिए, अगर मैंने उसमें से हनी पोर किया, मैंने उसमें मिल्क पोर किया, तो मुझे सेपरेटली अब हनी चाहिए. Can I able to do that? Definitely no. No, sir. Definitely no, right? So for that particular purpose only, we have a distributed database, right? I'm going to keep that particular, or you can say as a receiving ticket information in the database, right? मैं एक separate table create कर लूँगा या फिर separate database create कर लूँगा. जैसे हम लोग SQL में create करते हैं ना, we're going to see how we can create the database and how we're going to use that particular databases. Okay, हम लोग as much as database create कर सकते हैं and database को use कर सकते हैं. तो उसी तरह से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेसेस है. सारी इंफॉर्मेशन हमारे लोकल कंप्यूटर्स में रहते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन लोकल कंप्यूटर्स, ये एक लोकल कंप्यूटर नहीं रहता, इसलिए यहाँ पे लोकल कंप्यूटर्स लिखा हुआ है. कंप्यूटर्स, देयर आर मेनी कंप्यूटर्स इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम. आई सारे के सारे ऑल दिस आर कनेक्टेड विद वन मेन कंप्यूटर. ओके, वन मेन डेटाबेस के साथ कनेक्ट रहते हैं. सो ताकि मैं डिफरेंट चीजें को डिफरेंट जगह पे स्टोर कर पाऊँ. ओके, गॉट इट? So the data which is not at a one place, okay, not at a one place, as well as it is distributed at various sites of the organizations. Okay,
And you can say this particular sites are connected to each other with the help of some communication links, and these all our databases are connected to each other, remember. Okay, and they are that particular things which are they are connecting, they are called as a links. Okay, and that links will going to help them to access the distributed data easily. Okay. Yes. Oh, great. So in a distributed database also we have a two types. First one is called as a homogeneous, and second one is called as a heterogeneous. In homogeneous, what happened? Suppose homogeneous data is called means only one type of data. Okay, only one type of data which having some kind of an underlying hardware. Okay, and they are run over only the same operating systems. So that is, you can say, as a homogeneous. Okay, and heterogeneous, you can say, suppose heterogeneous means different types of data, different types. I'm not talking about the different data, I'm talking different types of data. Okay, अब suppose मेरे पास milk है, right? Milk में I have a milk of milk powder का milk रहता है, right? Then cow milk रहता है, right? So these are the, you can say, one type of belongs to the category of milk only, but I'm putting that in one container, or I can be put into different kind of a container, right? मैंने powder milk I have kept in different bottle, then cow milk I have kept in different bottle, in that way only. Okay, that is related to main entity only. That entity is just get distributed in different databases. Okay, got it, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next we have, yeah, next we have called as centralized database. Now what happened in centralized database? Suppose, okay, the data or information, okay, which is stored at a centralized location. You all know the centralized, right? Centralized का मतलब क्या होता है? एक central power जो many sub central powers को control कर रही है, right? Am I audible now? Yes, sir. Yes, Yes, yes. sir. Yes, sir, audible. Okay. Audible. Okay. So see, so वो डेटा हमारा जो कि स्टोर है सेंट्रलाइज लोकेशंस पे, राइट? एंड यूजर्स वहां से क्या करिए, डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस कर पा रही है. अब सपोज आई कैन गिव द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस. मेरे पास एक डेटाबेस है जो कि इंडिया में. ओके, नाउ व्हाट आई वांट, माय मेनी ऑफ द क्लाइंट्स इज जस्ट इन यूएसए. ओके, दे आर सिटिंग इन यूएसए, सम आर सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, सम आर सिटिंग इन कनाडा, सम आर सिटिंग इन रशिया. ओके, डिफरेंट लोकेशंस पे सब ये है बैठे हुए. नाउ व्हाट दे वांट माय डेटाबेसेस. ओके, so what they can access the my databases, so that my particular database which is in India, that is the centralized database. Okay, वहां से सारे databases different locations पे connect है. Okay, and ये सब टाइप के database जो centralized database है, ये सब ना application procedures को handle करती है. ठीक, जो application types of data आते हैं ना, जैसे हमारे पास applications हमने कुछ इंस्टॉल किया हमारे पर्टिकुलर कंप्यूटर में और पर्टिकुलर स्मार्टफोन्स में, तो उसमें जो डाटा जनरेट होता है वो सेंट्रलाइज टाइप ऑफ डेटाबेस में जाता है. ठीक है, ताकि वो हेल्प करता है यूजर्स को कि कैसे हम डाटा को एक्सेस कर पाएंगे. इवन वी आर सेटिंग फ्रॉम द रिमोट लोकेशन. ओके, रिमोट लोकेशन से भी हम एक्सेस कर सकते हैं डाटा को. ठीक है, अब बहुत सारे के उस डाटा को एक्सेस करने के लिए बहुत सारे के हमारे पास ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर्स रहते हैं, जो कि मोस्टली वेरिफिकेशन के लिए या वैलिडेशन के लिए या एंड यूजर्स को कैसे हम कर सकते हैं, उस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, अब बहुत सारे जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस रहता है, प्रोसीजर्स रहता है, उसके काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होते हैं, ताकि वो रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग उन पर्टिकुलर क्लाइंट्स को दे देंगे जिसको वो डाटा एक्सेस करना है. ओके, सो दैट इज सेड टू बी एज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस. ओके, गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next we have our open source databases. Okay, now what happened in open source databases, you can see ओपन सोर्स डेटाबेसेस मोस्टली ना मार्केटिंग फील्ड में या बिजनेसेस टाइप ऑफ फील्ड्स में काम आते हैं. ठीक है, जहाँ पे ऐसा डेटाबेस जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ जहाँ एक्टिविटीज परफॉर्म होने वाली है या ऑपरेशंस परफॉर्म होने वाली है, एंड दैट पर्टिकुलर ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज जस्ट हैज टू बी एन ओपन वे. ओके, वो काफी ओपनली रहेगा, उतना मतलब उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कि हाँ इतना सिक्योरिटी रखना है. अभी ऑफ कोर्स अगर मुझे किसी चीज का एडवर्टाइज करना है कि मैं एडवर्टाइज को सिक्योरिटी से प्रोवाइड करूंगा, मतलब सिक्योरिटी रखते हुए करूंगा क्या? ऑफ कोर्स मुझे उसको पब्लिकली नोन करना है, राइट? मार्केटिंग का वो बिगेस्ट स्ट्रेटेजी है हमारा एडवर्टाइजमेंट, जो कि मुझे किसी प्रोडक्ट को अगर सेल करना है तो मुझे उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा. एडवर्टाइजमेंट को भी प्राइवेट में होता है क्या? हैव यू सीन? No, ऑफ कोर्स उसके लिए क्या लगता है हम लोग को, पब्लिकली हम लोग बैनर्स ये करते हैं, है कि नहीं? विल जस्ट रीच आउट टू द न्यूज़ स्टेशंस और टीवी स्टेशंस, राइट? So these are the things which is comes under the, and that particular data generated and kept that particular data in the open source databases. Okay, next you might be familiar about the cloud databases, right? Many of you heard about the cloud concept, right?
And one of the major example I'm going to give the cloud. सबके पास Windows operating system है. Some might be having the Linux operating system or Ubuntu, but many of them you are using the Windows operating system, right? Yes. Right. अब Windows operating system में हमारे पास वन ड्राइव रहता है, एक वन ड्राइव फाइल रहता है, ठीक है. Here you can see here this you can see this is the cloud. This is called as a cloud database. Okay, you can see here. This is called as a cloud database. You can see OneDrive personal. Okay, so this is one of the cloud database which is provided by the Microsoft in Windows operating systems. Okay, so here data has been specifically getting some stored over the clouds only. Okay, and these clouds are called as a virtual environments. Remember, these clouds are called as a virtual environments. Okay, and the cloud having the three parts, that is hybrid cloud, public cloud, and the private cloud. Okay, I'm not going to go into that much detail what is public, private, and hybrid, because that is will be the other concepts. Okay, just remember the cloud having the three parts, that is public, hybrid, and private. Okay, now what happens? Whatever I have to optimize or whatever I have to do in the particular databases or in that particular data, that has to be done on the virtual environment only. This has to be done in this particular OneDrive only. Suppose I want to upload one file, right? That file is going to first upload in this particular drive for the backup. Okay, suppose we have deleted that file, but some of the files I've kept in this particular OneDrive, so I can access and I can restore that particular file from here. It is kind of a recycle bin concept. You can, right, when you have deleted some files, that files is stored in a recycle bin, so you can access if you have forgotten or by mistakenly you have just deleted that file, so you can restore that files from the recycle bins, right? For that particular concept only be using the cloud databases. Although there are many features on the cloud databases, this is a separate concept. Next we have a call as NoSQL databases. Okay, many of you heard about the MySQL, NoSQL, SQL, right? Why we having this all terms? हम लोग को ऐसे different terms क्यों? MySQL है, NoSQL है, ठीक है, SQL है, तो ऐसे different terms क्यों है? See, MySQL में क्या रहता है actually? Okay, first I'll explain you what is the NoSQL. NoSQL databases में क्या हो रहा है? यहाँ पे जो अगर मेरे पास डेटा बहुत ज्यादा है, मतलब अराउंड बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस में डेटा आ रहा है, ठीक है, लार्ज डेटा सेट्स आ रहे हैं, और उस डेटा सेट्स के हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट्स हैं, ठीक है. फर्स्ट वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में स्टोर थे, अब वो वहां से हटके कहीं और लोकेशन पे शिफ्ट हो रहा है. तो सारे जो लोकेशन पे शिफ्ट होगा और जो बिग डेटा है, उस सारे बिग डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास NoSQL है. ओके, मोस्टली याद रखना कि जितने भी बिग डेटा के कंसेप्ट हैं और जितने भी बिग डेटा है अराउंड दैट डेटा शुड बी इन around zettabytes and yottabytes. Okay, hi, this class recording also. Okay, you're going to get a class recording, don't worry, I'm recording the session, so you're going to get it. It's okay. Sir, LMS पे मिलेगा क्या ये भी? Yeah, LMS पे मिल जाएगा. Sorry, I joined late, so I asking. Oh, okay, no worries. ठीक है. So where I was, so when I having the big data, right, around in the form of terabytes or in the zettabytes, zettabytes you can say around 10 into 10 raised to 15 or 10 raised to 18, that is called as the zettabytes and the yottabytes. Okay, यानी बहुत बड़ा डेटा guys, you can even imagine around trillions में वो डेटा रहते हैं. Trillions means एक के आगे 30 zeros, 30 zeros, then it can make the trillions. So उतने टाइप्स के डेटा जब जनरेट होंगे, so that can be handled by the NoSQL. SQL भी हमारा हैंडल करेगा, लेकिन SQL सिर्फ मिलियन तक में हैंडल कर सकता है, राइट? उतने भी बड़े डेटा को हैंडल नहीं कर पाएगा, बिकॉज IoT डिवाइसेस से जो हमारे डेटा जनरेट हो रहे हैं, दैट ऑल डेटा जस्ट गेट इनटू द somewhere placed in the NoSQL databases only. And the one of the famous of the NoSQL databases we call as a virtual servers, and that virtual servers mostly named as a Hadoop, right? You might be heard about the Scala. Okay, right? So these are the some NoSQL databases you have. सर वो हडूप मैंने सुना था वो इंटरव्यू में भी किसी को आया था, मतलब कि मैं देख रहा था. ओके, वो क्या होता है एक्चुअली? वही तो मैंने बताया कि जैसे हमारे पास SQL है, राइट? हमारे पास SQL क्यों यूज करते हैं हम लोग? जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, फॉर द कलेक्शन एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा, स्टोरिंग ऑफ द डेटा, राइट? लेकिन SQL की भी क्या है, SQL थोड़ा ट्रेडिशनल है. SQL की लिमिट्स है हमारे पास कि अराउंड मिलियन तक में मैं ले सकता हूँ, 10 lakhs ऑफ रिकॉर्ड्स, अराउंड 20 lakhs, 30 lakhs, 1 crore तक में रिकॉर्ड्स अराउंड ले सकता हूँ, ठीक है. बट हडूप क्या है, उस हडूप अराउंड बिलियंस ऑफ डेटा के लिए, मींस यू कैन से 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ अगर ऐसा डेटा जनरेट हो रहा है, बिकॉज सी IoT डिवाइसेस या फिर कोई डिवाइसेस सिर्फ एक सेकंड में टेराबाइट्स में डेटा जनरेट करती है. यू कैन से एक सेकंड के सिर्फ वीडियो, एक सेकंड का कुछ अगर IoT डिवाइसेस जनरेट करेगी तो टेराबाइट्स में जनरेट करेगी, तो 24 आवर्स में कितना जनरेट करेगी, राइट? यू कैन थिंक अबाउट इट.
टेराबाइट्स कितना ज्यादा हो जाएगा। तो 24 आवर्स में वो पेटाबाइट्स में जनरेट करेगी, फिर पेटाबाइट्स से कभी कभी जेटाबाइट्स में जनरेट करती है। तो वैसे सब डेटा को हमारा सीक्वल हैंडल नहीं कर पाएगा। फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस वी यूजिंग द हडूप। हडूप वैसे सब डेटा को जनरेट करता है, जिसको हम लोग बिग डेटा बोलते हैं। ठीक है, अभी आजकल मार्केट में वही टर्म्स आ रहे, बिग डेटा। ओके, सो दैट इज डन इन द हडूप। इट्स अनदर डेटाबेसेस। ओके, गॉट इट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Sir, MySQL. Yes, sir. Yeah, someone is saying MySQL. हेलो, Hello, sir. Sir, हाँ, sir, आपने वो MySQL नहीं बताया ना? ओके, MySQL। सी, SQL क्या रहता है? SQL इज जस्ट लाइक अ वेट। MySQL मतलब जहाँ पे मोस्टली यू कैन से एग्जाम्पल्स में लेता हूँ, ये SQL से काफी ज्यादा ये रहता है, फास्ट रहता है। ठीक है, SQL से काफी ज्यादा फास्ट रहेगा MySQL। मोस्टली यहाँ पे वर्चुअल सर्वर्स, ठीक है, जो हमारे वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट होते हैं, वर्चुअल सर्वर्स इन द सेंस आई कैन गिव यू सपोज वेट आई टेकिंग सम एग्जांपल्स, क्योंकि अगर मैंने ऐसे टेक्निकल एग्जांपल्स दिए ना तो काफी ज्यादा ये हो जाएगा। सी, SQL and MySQL they both are same. Okay, just consider they both are same. SQL and SQL इनके सिंटैक्सेस बहुत ही हद तक सेम है, बहुत हद तक। ओके, बहुत हद तक सेम है। अगर मुझे सपोज मुझे कोई ये करना है, सिलेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर डेटा से, या फिर मुझे रिट्रीव करना है डेटा को, तो मैं सिलेक्ट कमांड यूज करता हूँ। सेम इन MySQL आल्सो आई एम यूजिंग द सिलेक्ट कमांड। ओके, सो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है SQL और MySQL में, बस उसको नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा दिया गया, बाकी सब कुछ उसमें सेम ही है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, फर्स्ट टू 10th है, ठीक है, फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड है, हर एक स्टैंडर्ड के डिफरेंट लेवल्स हैं, राइट। अब हर एक स्टैंडर्ड में हमारे पास, सपोज 10th स्टैंडर्ड में हमारे पास डिफरेंट डिविजन्स है, am I right? Division A, Division B, Division C. Yes. So many of you ask from which division you are. So you say from I am from division A, I am from division B. But सबके सब कहाँ पे रिलेटेड है? सब 10th के ही है कि नहीं? तो उसी तरह SQL और MySQL भी कुछ ऐसा ही, दोनों के दोनों ही डेटाबेसेस हैं। बस you can say database is a parent, then SQL is a child, and MySQL is a sibling of that particular child. Okay, इस तरह से मोस्टली कंसेप्ट है। Okay, sir. Got it? Hello? Yeah. Yes, sir. Okay, great. Next we have a call as a graph databases. sir. Yeah. सर ये एक होता है नो सीक्वल और माई सीक्वल। सर ये PL/SQL क्या होता है? मैंने एक जगह पढ़ा था। PL/SQL PostgreSQL होता है। अच्छा, PostgreSQL एक्चुअली PostgreSQL में क्या होता है, जैसे SQL की क्वेरीज लिखते हैं ना, PostgreSQL SQL का एडवांस वर्जन है। ठीक है, SQL का एडवांस वर्जन, RDBMS का एक लेवल स्टेप थोड़ा अहेड, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस काइंड ऑफ क्वेरीज ज्यादा परफॉर्म होते हैं। वी आर गोइंग टू सी द ट्रांजैक्शन क्वेरीज आल्सो कैसे परफॉर्म करते हैं, लेकिन बेटर तरीके से अगर और परफॉर्म करना है तो हम लोग PL/SQL यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ PostgreSQL, जो कि एक एग्जांपल है MySQL का। रिमेंबर कि PostgreSQL एक MySQL का एग्जांपल है, उसके सिंटैक्सेस भी सेम है PostgreSQL की भी। सी, अगर तुमने SQL अच्छे से पढ़ लिया, you can learn any databases, you can learn the Oracle, you can able to write the SQL, you can able to write the SQL servers and all server versions like 2012, 14, 16, 18, like that. You can write the queries of PostgreSQL, you can write the queries of MySQL. Okay, हाँ, NoSQL की queries नहीं लिख पाओगे सारे तुम लोग, क्योंकि NoSQL डिफरेंट ही फॉर्मेट ये करती है, जैसे MongoDB हो गई, कैसेंड्रा हो गई, MariaDB हो गई, डेटा लेक्स हो गया, फिर हडूप हो गया, ये सब NoSQL के हैं। ये NoSQL बहुत डिफरेंट फॉर्मेट्स में लेती है, ये YAML के फॉर्मेट्स में स्टोर होता है, या फिर हमारे पास यू कैन से JSON फाइल तुमने सुना रहेगा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस, उसके फॉर्म में रहता है हमारे पास, तो उसके फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो ये सब डिफरेंट डेटाबेस है, लेकिन एक बार SQL हो गया तो MySQL के जितने लैंग्वेजेस है और NoSQL और PostgreSQL है, वो सब इजीली यू कैन राइट, और अदर डेटाबेसेस लैंग्वेजेस आल्सो यू कैन एबल टू राइट इट। ओके, नेक्स्ट वी हैव कॉल्ड एज अ ग्राफ डेटाबेसेस। ओके, ग्राफ डेटाबेसेस में एक्चुअली क्या हो रहा है, सपोज you might be heard about the graphs, right? Graphs किस लिए हम लोग create करते हैं? If you all have from some of them from the coding background or coding I'm saying technical background or engineering background, so you might be heard about the graph. Graphs में दो parts रहते हैं, एक तो रहता है vertices, एक रहता है edges. So let me show you.
ओके एक वर्टाइसेस रहेगा, एक एज रहेगा, ओके एंड जो कलेक्शन रहेगा नोड्स एंड एजेस का, वर्टाइसेस एंड एजेस का जो कलेक्शन रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ डेटाबेसेस. ओके आई शो यू जस्ट नाउ द विजुअलाइजेशन. जस्ट वेट, सी is it visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Suppose say this is my one of a node. Okay. And again, this is my other node. Okay. This is my another node, or you can say vertices, and this is my other vertices. Got it? ये मेरा vertices 1 या फिर vertices बोले nodes बोलो, दोनों same है, ठीक है? ये मेरा vertices 2. This is my vertices 3 and this is my vertices 4. I have my 4 vertices with me. ठीक है? अब ये vertices mostly कनेक्टेड है एजेस के साथ में, ठीक है? ये वर्टाइसेस कनेक्टेड है एजेस के साथ में, ये कनेक्टेड है हमारा इसके साथ में, देन दिस इज कनेक्टेड विद दिस वन, दिस इज कनेक्टेड विद, देन दिस इज कनेक्टेड विद दिस वन, ओके एंड माइट बी दिस आल्सो इज कनेक्टेड विद दिस वन, ओके सो ये एक आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे ये, so this is connected with this one, okay so these all are connected with each other. This is called vertices, this is called edges. So the collection and the data, जो भी डेटा स्टोर होता है ये वर्टाइसेस में स्टोर होता है, ठीक है? अगर सपोज मुझे वर्टाइसेस में मेरा सपोज कोचेक्स का डेटा स्टोर है, यहाँ पे मेरा हितेश का डेटा स्टोर है, बट कोचेक्स वांट टू एक्सेस द हितेश डेटाबेस, तो मैं उसको कैसे एक्सेस करूंगा? कैन एनीवन से मी कि मैं उसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? अगर कोचेक्स को हितेश का डेटाबेस चाहिए तो कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? जो हम दोनों Anyone, any idea you are getting? सर जो कनेक्शन है बीच में Definitely ये जो कनेक्शन है बीच में हमारे पास, दिख रहा है ये कनेक्शन, this edges, from by using this edge I can access the data. Okay, so CoachX can access the Hitesh database by using this connections. ठीक है? तो हमारे हमको एक कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना पड़ता है हमारी क्वेरीज में. Okay, got it everyone? Okay, sir. अच्छा Yes, sir. एंड कंपनी जो ग्राफ डेटाबेस को यूज करती है ताकि हम लोग कुछ डाटा को माइन कर पाए कस्टमर्स के बारे में, हमारे सोशल मीडिया से अगर मुझे कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन निकालनी है या फिर कहीं इन्फॉर्मेशन के कहीं से इन्फॉर्मेशन मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग ग्राफ डेटाबेसेस यूज करते हैं. बट नेक्स्ट वी हैव कॉल्ड एज एन OLTP databases. Okay, now what is a OLTP database actually? See, OLTP means as called as an operational databases, or you can say object oriented Latin programmable databases. Okay, OLTP एक डिफरेंट टाइप का डेटाबेस है, लेकिन हालांकि इसका परफेक्ट फुल फॉर्म तो ज्यादा ये नहीं किया गया था, बट यू कैन से एज अ OLTP databases इज ऑब्जेक्ट डेटाबेसेस. ओके, सो एक ऐसा डेटाबेस है जहाँ पे क्वेरी जो रहता है, जो हम लोग क्वेरी करते हैं बहुत ज्यादा फास्ट ये करते हैं डेटा इंटीग्रिटी को मैनेज करने के लिए मल्टी एनवायरनमेंट में और डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, डिफरेंट सिस्टम्स में. हमको जैसे मेरे पास एक डेटा लिनक्स में स्टोर है, सम ऑफ द डेटा मुझे स्टोर विंडोज में, कुछ डेटा मेरा स्टोर है उबंटू में, तो कुछ डेटा मेरा स्टोर है सेंटोस में, कुछ डेटा मेरा स्टोर है तो रेड हैट में, या डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरे डेटाबेसेस स्टोर है. अब मुझे क्या करना है, कंबाइन मुझे सारे डेटा से मुझे एक्सेस करना है, राइट? मुझे डिफरेंट सिस्टम से डेटा को एक्सेस करके क्वेरी को परफॉर्म करना है, तो उसके लिए मैं OLTP डेटाबेसेस यूज करूंगा. ओके, गॉट इट? Okay, sir. यस सर. Next, we have a call as a personal database. What do we understand by the personal database? Can anyone tell me what is the mean by the personal databases? Just by looking at the words only, I'm asking. सर ये अपने PC में ज्यादा यूज होता है. Like our correct, own correct. laptops, phones. Correct, absolutely. जो भी हमारा डेटाबेस, जो भी डेटा स्टोर होगा, कहाँ पे स्टोर होगा? ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है? Computer. और वो डेटा काफी ज्यादा स्मॉल रहेगा, राइट? वी डोंट वांट कि हमारा डेटा काफी ज्यादा ये हो जाए. वो डेटा क्या रहेगा? काफी ज्यादा स्मॉल डेटा रहेगा, विद इन MB फाइल रहेगा या फिर विद इन GB फाइल रहेगा, राइट? एंड वो जो मोस्टली जो डेटा स्टोर है हमारे पास लोकल कंप्यूटर में, जनरली उस ऑर्गेनाइजेशन के सेम डिपार्टमेंट ही स्टोर कर सकते हैं. जैसे तुम सिर्फ उस डेटाबेस को तुम या फिर तुम्हारी फैमिली यूज कर सकती है, राइट? और कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू हैव गिवन सम काइंड ऑफ अ पासवर्ड ऑन द डेटाबेसेस, राइट? तुम्हारा लैपटॉप प्रोटेक्ट है किसी पासवर्ड से, बिफोर स्टार्टिंग विद द लैपटॉप यू प्रोवाइड द पासवर्ड मैकेनिज्म, राइट? सो वो सिर्फ तुम या फिर तुम्हारी फैमिली जिसको पासवर्ड एक्सेस रहेगा दे कैन यूज दैट. दैट इज द पर्सनल डेटाबेसेस. नेक्स्ट वी हैव अ कॉल एज अ मल्टी मॉडल डेटाबेसेस. ओके,
मल्टी मॉडल डेटाबेसेस क्या होता है? एक्चुअली डिफरेंट डेटा मॉडल्स को, मल्टीपल मॉडल्स, डेटा मॉडल्स को जो सपोर्ट करता है. आई गोइंग टू कम द डेटा मॉडल्स. ओके, इसमें है कि व्हाट इज मीन बाय डेटा मॉडल्स. दे आर हैविंग द सेपरेट और यू कैन से टॉपिक. ओके, सो डिफरेंट डेटा मॉडल्स को ये क्रिएट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं. सपोज हमारे पास फोन है, वी आर यूजिंग द स्मार्टफोन, but still we having a different versions of the smartphone, right? So that is called as a data models. We have a different types of models in that, in our particular data. So different multiple data models को support करने के लिए जो database use करते हैं वो रहता है हमारा multi model database. Got it? Everyone? Got it. Great. Great. Next we have a document or JSON databases. Okay. Now JSON document databases means the data which is stored in the format of JSON type. Okay. JSON is called as a JavaScript object notation. Okay, I'm going to show you how the data is stored in a JSON file. Wait. See how the JSON data looks like. See, I'll show you. You all can see, right? Suppose I am writing here name. I'm going to create a column. I'm writing a name. I'm giving a record, Hitesh. Then again, I'm writing a name. I'm suppose writing a age. Okay, I'm giving a column. I'm writing a right. I'm giving the age. Suppose I'm writing my address. Okay. Then I've given a address. Okay. I've given address. So this is the sim. This is the columns, name, age, and address is a column. This is my data. Okay, and that particular data is stored in different formats. So this is called as a JavaScript object notation database, right? जो कि हम लोग MongoDB भी बोलते हैं, right? हमारा MongoDB भी इसी टाइप का डेटा को स्टोर करता है. Remember, so these are the some you can say MongoDB databases स्टोर होते हैं. Got it? This is the format of MongoDB as well as the JSON notations. Get it, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Oh, great. Okay, so हो गया हमारा ये basis. Next we have a hierarchical database. You already know the hierarchical concept, like parent-child process. Parent means parent as at the top, right? Parents having several children. Okay, so this type of data which shows the some kind of a parent-child relationship, that is called as a hierarchical data. Okay, tree-like data you can say. Tree, we have a root. From root we have a trunk. From trunks we have a branches. From branches we have several branches. From several branches we have a leaves, and that leaves is called as a data. Okay, so the main part is what is our root of the data. So mostly in hierarchical databases, root is the main part. Okay, next we have called as a network database. Network databases means, as you can see, mostly on internet, everything is connected with the help of the network, right? So in order to connect every database management systems, every system on that particular internet, okay, we have a network databases management system. Okay, network DBMS. So we're gonna see the what is a network DBMS or more in detail, or DBMS in detail. Before that, let's understand what is the, you can say, databases components. We have several components for the databases. First, we require the hardware, which is our machine. Then we require the software, that is our software app, which you have installed, like SQL Server Management Studio SSMS, right? Or SQL Server Express you have installed. That is the software. Then data, whatever the data you are getting or whatever the data you are generating. Then procedure means the query which you are writing over that particular data, or in order to manage the data, what queries are you writing, right? That is called the procedure. Then you have a data access language. How you going to access that all the data? That is called as a data access language, like DML, DDL, DCL, and TCL. Right? These are the some command classifications you are just using and you have used the data access language. So these are the some database component you should know. Next concept is DBMS. What is meant by database management systems? We have studied about the database. We have studied about the data. So we study about the SQL. Now, what is mean by database management system? Okay, it is the same thing. Database management system मतलब जहां हमारे पास collections है, हमारे पास queries के collections है, programs की collections रहती हैं, जहां पे user उसको database को access कर पाते हैं, easily manipulate कर पाती है data को, ठीक है, उस data से report generate कर पाती है. Even we can generate a report from the SQL server, guys. If I should tell you, we can generate the reports. I'll tell you how you can generate the reports also. How you can generate that report in Power BI, right? तुमने देखा है कि Power BI में हम कैसे report generate करते हैं, कैसे हमने visualization create करते हैं, right? So we can do the visualization in SQL also. We have a separate you can say concept for that. Okay, so we can generate the report, we can represent our data,
Okay, we can control some kind of a controlling or manipulating things we can do with the databases. That is called as a database management system. Simple. उस particular database को manage करने के लिए we want some kind of a system. नाम से ही उसको पता चलता है कि database management system. So the system which in order to manage that particular databases, manipulate the databases. If anyone asks you in the interview, what is meant by database management system? So you can just on by the name only. If you are not able to remember the definition, proper definition, you can just tell the by just you can say by the name only, database management system. Okay, the system which is going to organize the data, manage the databases perfectly, or you can manipulate the data, you can generate the data reports or access the databases. That is called as a DBMS. Okay, so we have a several advantages like offers the variety of techniques to store and retrieve the data. These all advantages and disadvantages you can read. Okay, I'll provide this PPT this on your particular LMS. Okay, you're going to get a first session PPT as well as the session recording. Don't worry. This PPT you're going to get it. Okay. Next, you have college uniform administration procedure for the data. So these are the several things we have. You can say this is the database management systems, and several types of databases are connected. Like Oracle, we have connected. We have MySQL. We have connected with the MongoDB. Right. So these are the several databases which connected with the some particular management systems. That is database. With some DBMS advantages, of course, if we have some kind of advantage, definitely disadvantage रहता ही है वहाँ पे, right? Advantages तो रहता है, तो disadvantages क्या है? Cost of hardware, of course यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर का ये है कॉस्ट है और हार्डवेयर का कॉस्ट काफी ज्यादा हाई है, इसके रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा बजटेबल रहता है, बहुत ज्यादा बजट इसका बनता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को मोस्टली ऑफन ही हैंडल करता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को जल्दी मैनेज नहीं कर पाता है डीबीएमएस हमारा, ओके। Next, the very important concept we call as a RDBMS, that is called as the Relational Database Management System. What happens in a relational database management system? See, in RDBMS, I have told you that whatever SQL is a part of RDBMS, right? Relational means you can say the things which can be done in the form of table format, right? कोई भी डेटा अगर मुझे टेबल फॉर्मेट में स्टोर करना है, that is called as a relational database management systems, right? Got it? What is meant by RDBMS? जहाँ पे हमारा डेटा रिलेशंस के फॉर्म में यानी टेबल्स के फॉर्म में हमारा स्टोर हो रहा है, जहाँ डेटा हमारा, ठीक है? या आस्क क्वेश्चंस। रो और कॉलम के फॉर्म में जो होता है टेबल, करेक्ट। एक्सेल, यू नो एक्सेल? यस सर। हाँ, तो उसके फॉर्म में कैसे स्टोर होता है? टेबल के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, हाँ, that is called as the relational database management system. It is one of the example of RDBMS. स्प्रेडशीट हमारा या फिर एक्सेल हमारा एक एकदम लोकली यू कैन से लोकल कंप्यूटर पे जो हमारा सॉफ्टवेयर रहता है, वो एग्जांपल हमारे पास RDBMS, ओके, जिसमें सेट ऑफ टेबल्स हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर रहता है और हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस जाके डिफरेंट फॉर्मेट्स में डिफरेंट सेल्स में हमको इस डाटा को स्टोर करना है, ठीक है? गॉट इट? एंड SQL उसी RDBMS का पार्ट है, SQL उसी RDBMS का पार्ट है, ठीक है? SQL सर्वर है, MySQL है, Oracle है, Microsoft Access, ये सब के सब क्या है? RDBMS के पार्ट है। गॉट इट? Yes, sir. ठीक, यहाँ पे मैंने एक परफेक्ट एग्जांपल दिया है कि RDBMS का you can see employee ID, employee name, post and salary. This is my row, right? Then E1, E2, E3, E4. This is my columns, right? So see, I'm telling guys one more thing you have to remember. ऊपर के जो कॉलम्स है, कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स फील्ड एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स को हम लोग फील्ड्स भी बोल सकते हैं, कॉलम्स को वी कैन से एट्रीब्यूट्स आल्सो, रोज को हम लोग रिकॉर्ड बोलेंगे या फिर टपल बोलेंगे, थ्री नेम्स है, रो, रिकॉर्ड, टपल, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली है। कॉलम के लिए कॉलम, फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स। सम यू नो कभी-कभी ना मोस्टली इंटरव्यूअर ना बहुत कंफ्यूज कर देता है ये टर्म्स में। कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टपल और एट्रीब्यूट? ओके, तुमने पढ़ा है ऑलरेडी, या वी नो द डिफरेंस। अगर वो पूछे कि रो और कॉलम में डिफरेंस क्या है, तो वी कैन टेल या कि रो इज इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, कॉलम इज इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल फॉर्मेट, राइट? हम लोग कह सकते हैं। बट इफ इंटरव्यूअर आस्क यू कि टपल और एट्रीब्यूट्स में क्या है, कैन यू एबल टू टेल? अगर जब तक तुमने पढ़ा नहीं रहेगा, राइट, यू नॉट एबल टू टेल इट। सो यू हैव टू रिमेंबर, रो, रिकॉर्ड्स एंड टपल्स एक ही है, कॉलम, फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स एक ही है, दे बोथ आर द सेम, ठीक है? Yes, sir. Okay. Next, so these are the things I have explained you: table, row, what is the table, and properties. Okay.
what is a row and record. So these are the things which I have given you. Okay. Next we have some things like called as a domain, null values, and data integrity. Okay, domain means the whatever the possible values you're going to put for that particular attribute, and that what attribute can contain the different types of domain. That is called as a domain. Okay. Then you have a null values, which that per, you know the null values, right? Which specify the blank. Okay, blank during the record creation or during the join concept you have used. जब हम लोग joins perform करते थे उस time पे हमारे पास blanks ये आते, right? Blank null values आते हैं. Then so that is called as a null values concepts. Fill with the zeros or fill with a content space. Null values को हम लोग fill कर सकते हैं. It depend upon us कि कैसे how we have fill, how we can fill that. Okay. Then हमारे पास data integrity का concept आता है. Okay, data integrity is kind of a, just in recent interview ये data integrity बहुत ज़्यादा ये famous question था, even for the freshers and even for the experienced one. What is the data integrity? So you have to remember data integrity is nothing but you can say overall accuracy or overall performance of the data. Okay, or reliability or the completeness of the data, right? That is called as a data integrity. And we have several types of data integrity called as an entity integrity, domain integrity, referential integrity, and user defined integrity. अगर तुमने सिर्फ names भी बोले interview में कि what is entity, this entity integrity, domain integrity, referential and user defined names भी अगर बोले, so interview को पता चलता है, yeah, you know the concepts. Okay, you don't have to define entity, what is the domain, what is referential, and what is the user defines. Although I have given that entity means some no, there should be no kind of duplicate rows in a table. Domain, each column should be validly and identify uniquely. Then referential, which can make a references by using the keys. Then user defined, which we can make own functions. So these are the things we can do. Okay. Got it, everyone? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Okay. Okay. So I guess around it's very big. It will take around time. Okay. So we have got till database schema, right? We have come till database schema. Now from here onwards, tomorrow I'll go. सर इसको शेयर कर दीजिएगा ना. Yeah. ये जैसे मतलब पूरा complete होगा PPT कल tomorrow. I'll share the next day. Okay. क्लास हो क्या सर? मेरे को मुझे पता नहीं था, मैं मतलब कि किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा था तब जाके ज्वाइन किया. Okay, no worries. No worries. All of you got the timings, right? From 9 to 10 tomorrow onwards. रात के 9 से 10. हाँ 9 से 10. सर नहीं होगा, मेरा रात के 9 बजे शिफ्ट होता है. आप 7 से 8 कर दो ना प्लीज सर, चल जाएगा. पप्पू व्हाट हैपेंस क्योंकि 9 से 10 सबने वहाँ पे रिक्वेस्ट किया फिर जितने भी प्रोफेशनल्स और ये रहते हैं. अरे रात के 9 ठीक है, मैं ड्यूटी ज्वाइन करके इसको लगा दूंगा डबल में फिर भी. लेकिन इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना सर? हाँ ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. हाँ सही. 9 to 10, sir. हाँ ये डेली 9 to 10. Okay. Any problem? No. No, sir. 8 to 9 तो वही है ना Others? Any No problem? problem. सर? Yeah. 8 to 9 तो वही है ना रिवीजन उसकी? Yeah 8 to 9 वो डाउट सॉल्यूशन. अच्छा ये तो रिवीजन वाली है ना ये? हाँ ये रिवीजन वाले हैं. अभी फिलहाल तो रिवीजन चलेगा ये. जो भी और भी मतलब अच्छा तुम्हारा छूट गया एडवांस रहेगा. वाला नेक्स्ट वीक से एडवांस वाला. हाँ एडवांस वाला मतलब नेक्स्ट वीक से होगा क्योंकि अराउंड 1 वीक जाएगा. इवन बेसिक्स में भी काफी कुछ तुम्हारे छूटे रहेंगे तो ऑल थिंग्स विल गोइंग टू कवर बाय मी ओनली. प्रैक्टिकल भी रहेगा, डोंट वरी. पहले जितने भी थ्योरी पार्ट है मैं कंप्लीट कर लेता हूं विद इन 1 to 2 days. देन आई कम इनटू द प्रैक्टिकल कांसेप्ट्स. ठीक. जस्ट कल ये थ्योरी खत्म हो जाएगा देन आई कम विद द प्रैक्टिकल फ्रॉम वेडनेसडे ऑनवर्ड्स. ओके. So 9 to 10 is perfect. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Okay, great. So I'm stopping here. So rest of the things like database schemas and entity relationships and all things we're going to cover tomorrow. Okay. Thank you, Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Okay. Great. Bye bye. Bye, sir. Thank Good you, night, sir. sir. Take care, sir. You're welcome. You're welcome.